It's never looks like the Gori boys will going to win the match that time. But he's just changing the complexion of the game with the one big six and at the same time contribution which is in the form of extra as well. That is open the gate for them. They got 5 gifted runs. It's a 24 for the loss of 5 wicket. Riaz is looking so good so far in his bowling. Right arm over the wicket to Karna. Karna this time set that one nicely. From almost drags the ball from outside the line of off attempt to get the single down to short of square leg region. The wicket single scope and Muzan to 25 for the loss of 5 wicket. Karna is off the mark and over number 4 is in progress. That brings Riaz into strike now. Came as opener for the side, still is battling in the middle for his team to get some good score. This time lovely delivery. This is what the Riaz is knowing for. I already mentioned it's not so easy for the batter to this time looks like well umpire Roland Pinto is not observing what really happened after that, because maybe he's called already it's a over which is completed, so why not to observe. He's told it's over. Have a look at, very interesting. Have a look at Mansoor as well, the wicket keeper throws the stumps and Karna and Riaz thinking about that might be a run. But once the umpire will go into call, it's all over. The over which is completed by umpire. There is no question of getting extra runs and no question of even getting out. If it is a Karna will be out of the crease and throw went into the stumps, then that time also that will not be considered because umpire already called it's over which is completed. This is what really happening in cricket sometime. if a Karna if is out of the crease, you can say that, yes, how you are giving the out, Roland Pinto, sir, you called it over. So this is all up to the position we are having there. And so anyhow, it's a 25 for the loss of 5 wicket and 4 overs was completed, 2 overs remaining. Still Gori young boys are searching for the right track here. There are remaining another 2 overs, 12 balls remaining. And out of 12 balls, the team Gori young boys, at least they wanted to get 15 runs so that they can get 40 runs. It's going to be a little bit satisfaction for the Gori young boys when they're going to depend this. Oh, full toss delivery, full toss. The batter, Karna, just wanted to play that reverse sweep. The ball also came in the same height where he loves to play the reverse sweep, but he missed it completely and no run scored. Mujib will be the bowler, bowling his second and last over of his quota. Again, lovely delivery in there, just following the batsman, coming into the batter sharply, and Karna managed to got a bat onto that. He wants the second, but Riaz is not interested. Scoreboard is 26 for the loss of 5 wicket. Mujib is the one who bowled a fantastic first over of just 1 run from the bat. This is a really great start given by him, Mujib, in the first over. It's not so easy in the bowling in the power play and conceding just a single run. And now he is bowling with some extra protection. And Atif, a little correction, Mujib to bowl right arm over the wicket. To Riaz, this time again, lovely delivery indeed. Fast and quicker one in the occasion. Wicket keeper misses it. Riaz at short fine leg fields the ball, returns the ball. Mansoor fails to gather the ball. And again, Riaz fails to get the bat onto that. So not to play that dotted deliveries in this crucial juncture where the team is required some runs for the team. Right arm over the wicket, drives that one down to Whitish long on. Definitely they come back for the second. Atif the fielder, but not good enough. Both the batters are completed 2 valuable runs. Good placement there from Riaz. This time he played just wide of that long on fielder. The Atif is a good fielder, but not good enough to stop the couple of runs here from the batter. With that couple of runs, Kobata moves on to 28 on the board for the loss of 5 wicket. 28 for the loss of 5 wicket in the over number 5 is in progress. Mujib to continue. Riaz again, lovely delivery, fast and quicker one in the occasion. Couldn't manage to get the timing in the stroke because of that sharp incoming delivery there from Mujib. Just a single here for Riaz. 29 for the loss of 5 wicket in the over number 5 is in progress. Last 7 balls remaining in the innings of Gori young boys. Can Karna able to produce one big shot here? The team desperately wanted some acceleration, but so far NM cricketers Mangalore are looking so good in the bowling.
Mujib, Jiskarna wanted to loft it at one, but missed it completely before Sadiq from the short mid-wicket region to collect that one. Ample time for Karna to collect the single. He will going to retain the strike for the last over. Completion of over number 5. Gori young boys going exactly 6 runs per over. It's 30 for the loss of 5 wicket. So this is a quarter-final number 3 is in progress of this prestigious Friends Trophy 2024. And what a fantastic competition is on in that bright sunny afternoon. Time is exactly 1 past 30. And have a look at the crowd here. Absolutely fantastic crowd enjoying the game of cricket. And even I'm just... even I'm watching some uniforms. Maybe that students also there came with a big number. Maybe the exam time or after examination, they just wanted to enjoy, relax because of coming out of from the mental stress after reading a lot for the examination, preparing, just wanted to have some relaxation to come and watch this cricket match in UCG cricket ground. It's going to be a great feeling. It's a great feeling when you're coming to UCG cricket ground, enjoying the game of cricket. And you can see that there is a young students are enjoying the game of cricket. Someone is taking some selfies as well. Again, outside the line of off-stamp, first ball going to be a delivery, which is a by call by umpire. Missed it completely by the wicket-keeper in that occasion. And very interestingly, umpire called it a fair delivery, but it's going to be a question by the batter Riaz. We'll go and wanted to review that decision from the umpire. The umpire told it's a fair delivery, and Riaz just wanted to review. He's got evidence enough from the non-strikers, and that is going to be wide. Just wait and see. Maybe sometime extra bounce we'll go into see here, and maybe that yes, umpire Arish Padil here as a third umpire will go into see whether the ball is a fair delivery, is a wide delivery. And yes, technicians of Bedra Media, just I wanted to see that as the, yes, it's a good angle to see the umpire. The front angle, please. Well, umpire having a front angle here and now going to give the decision. This is the right delivery. It's nothing wrong with the line, but extra bounce which is defeated the wicket keeper. And sometimes what happening is that Riaz might be a little bit misjudging and ball within the line. Because of that extra bounce, wicketkeeper also missed it, and even batter Karna is also missed it. 31 for the loss of 5 wicket in the over number last is in progress. Mazin, the very young Mazin, bowling from the far end. Right arm over wicket to Riaz. Riaz wanted to go for the mighty blow, but missed it completely. Again, the timing is not coming properly for Riaz. He's tried several times to go for the big shot, but not really getting with any kind of success. Because of that line and length with his ball by NM cricketers Manglore, it's not so easy. 32 for the loss of 5 wicket. Last 4 deliveries remaining, and Karna is on strike. Mazin. Right arm over wicket to Karna. Karna drives it on Apically, bound to deep longer, but not more than a single here. Good connection, but placement is not good enough to get any kind of big score. Just a single there. 33 for the loss of 5 wicket. Last 3 balls remaining. Mazim so far he's handled the pressure very well for NM cricketers Mangalore to bowl that last over. Riaz this time again. The wicket keeper missed it. A lovely delivery there from Mazim. Absolutely fantastic one, isn't it? It's not so easy, and again Riaz couldn't manage to judge that leg-cutter from Mazim. It's a very strong line to ball when the batters are looking for the big shot. So 34 for the loss of 5 wicket. Last 2 balls remaining in the innings of Gori young boys. Mazim, right arm over wicket, bows this time, swings it away straight to the hands of mid-wicket. Azhar taken a fantastic catch down at mid-wicket. So Karna has the contact, hoisting it over. Across the line, swings it away. But unfortunately, he couldn't manage to get past the fielder. Azhar, one of the safest pair of hands in the mid-wicket, taken an absolutely fantastic catch because ball went very quickly. Ball went like a tracer bullet, and have a look at the fielder there in the mid-wicket
Fantastic catch taken by Bazar in the deep mid wicket. Karna departs in this particular match. Is not that much of effective. Scored 4 runs in 7 deliveries. That's only because of NM cricketers Manglore bowler. Especially the Mazin is handling the pressure. Ewan is very young, but he's got a lot of talent. It's 34 for the loss of 6 wickets and last ball remaining in their innings of Gori young boys, and the batter will go into face his Fayaz. Can he able to get at least one big shot here? The badly required for the Gori young boys. But Mazim just wanted one good delivery here. This time swings it away. What I told, that one big shot which is badly required for the team Gori young boys, and Fayaz just doing that job for a Gori young boys and swings it away. That little bit ball outside the line of leg stump. And ball went into the fence for a 6, and the scoreboard jumps into 40 for the loss of 6 wicket, and they set a target of 41 to win the match. NM cricketers Mangalore. So because of that 6, Gori young boys can feel that it might be a little bit enough for them to depend the total, but seeing NM cricketers Mangalore's batting department, it might be the lot of hard work is required for Gori young boys. Because even that 40, but great work by the bowlers of NM cricketers Mangalore. Have a look at the scorecard here in the screen, main screen. This is a bowling performance. The leading from the front, economy of Mujib is outstanding. Just 7 runs in 2 hours. The great bowling performance here. And Riaz has scored a 14 unbeaten, but Fayaz has got a finishing touch in this last delivery with the strike rate of exactly 600. Isn't it? 1 ball, 6 runs. And that will going to give some kind of confidence for the bowlers of Gori young boys when they're going to depend that 40 runs. And wait and see how well team NM cricketers Mangalore will going to come back here to get that moderate total of 41 runs to win this match. This is all we can see in the screen now for some best wishes coming from all around the world for this prestigious Friends Trophy 2024, and which is proudly organized under the great leadership of Dikshit Chilimbi and under the very good sponsorship of all the sponsors. And special thanks to Prakash Kumpala, is the one really backing up this cricket tournament. We'll take a short break here, and after a short break, my friend Gopi will going to take over the microphone in our national language. And Gopi, 41 is the target. Looks like it's the same target which is witnessed against KCCR Kadri and KFC Kodikal, and ball the match which is went into that last over. And what do you think? The 6 in the last delivery of the over of the innings of Gori young boys, it can be the winning 6 here for the Gori young boys here, because if we manage to win the match with a small margin, then that the 6 of Fires definitely comes into play. But I think NM cricketers Mangalore, they got a fantastic batting department, and the team which is in a good form. The 23-24 season is definitely going to be outstanding season for NM cricketers Mangalore. That's why even Gori young boys also, they got a very good season. They're lifting some prestigious titles. So that we are just expecting some great battle between these two teams to get into the place of a semi-final of this prestigious Friends Trophy 2024. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, तो इस वक्त अंतिम गेंद पर जो फयाज का छक्का लगा था, वो फयाज का छक्का इस वक्त कुछ हद तक रन के औसत को एक्सेलरेशन दे चुका है। 41 रन बनाने हैं। तो यहाँ पर एनएम मैंगलोर के पास जो सशक्त बल्लेबाजी का लाइनअप है, उसके खिलाफ अगर गेंदबाजी करना है राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर, तो गोरी यंग बॉयज के गेंदबाजों को एक विशेष रणनीति के साथ गेंदबाजी करनी पड़ेगी। और जहाँ तक एनएम मैंगलोर का सवाल है, इस ऋतु में उनका प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा है, कई खिताबें उन्होंने अर्जित की है। और गोरी यंग बॉयज़ का जहाँ तक सवाल है, इस वक्त उन पर प्राबल्य स्थापित करना उतना आसान बात नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। और गोरी यंग बॉयज़ के गेंदबाजों में वो क्षमता, एबिलिटी ज़रूर है। एक बार अपना सही रिदम लय वो प्राप्त कर लेते तो निस्संदेह एनएम मैंगलोर के बल्लेबाजों पर भारी पड़ने की क्षमता रखते हैं। तो इस वक्त जहाँ तक सवाल है, इस ऋतु में दोनों संतुलित टीमें यहाँ पर भिड़ रही हैं। 41 रन बनाने 36 गेंदों पर, और देखते हैं यहाँ पर अंतिमकार इस मैच में विजय कौन दर्ज करता है। तो इस वक्त दोनों आरंभिक बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद तौफीक और आज़ीम, और गेंदबाज फयाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, शुरू करते हुए कहना पड़ेगा। और अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार रहता है हाथ के बल्लेबाज के लिए। और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई, पहला पावर प्ले ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ। दर्शकों का मैदान अब लगभग भर चुका है यहाँ पर, और भरनी भी चाहिए, क्योंकि मंगलूर के टॉप सीडेड टीमों के बीच
के मैचेस यहाँ पर खेले जा रहे हैं इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत फ्रेंड्स ट्रॉफी 2024-2024 के अंतर्गत। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त इस मैच का, तो एनएम मंगलोर का मुकाबला हो रहा है गोरी यंग बॉयज़ के साथ। इस मैच में ओवर की पहली गेंद अंपायर ने इशारा किया कि पारी की शुरुआत, और गेंदबाज फयाज इस वक्त शुरू करते हुए तौफीक का सामना करने के लिए तैयार। अजीम नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद। ओवर की पहली गेंद, ये गेंद इस बार गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट स्कूप किया मौका इस वक्त। ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली टेकन बाय द एक्स्ट्रा कवर फील्डर सम्राज जो फील्डर थे, पीछे की ओर दौड़ते हुए गेंद पर उन्होंने नजरें गड़ाई रखी और आखिरकार बेहतरीन तरीके से कैच को लपक लिया उन्होंने। देखिए किस तरीके से हुआ था, स्क्वायर ऑफ द विकेट इस वक्त तौफीक ने उछाला था, गेंद हवा में थी, लेकिन पीछे की ओर दौड़ते हुए अंतिम क्षण तक गेंद पर अपनी नजरें गड़ाई रखी और पहली गेंद पर यह विकेट प्राप्त करने में सफल। और तौफीक का विकेट गिर चुका है यहाँ पर गोल्डन डक के रूप में। और जहाँ तक तौफीक का सवाल है, इस वक्त पावर प्ले का फायदा उन्होंने उठाना चाहा, इनफील्ड क्लियर करना चाहा, इनफील्ड क्लियर तो कर दिया लेकिन फील्डर को क्लियर नहीं कर पाए। यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर पर बेहतर कैच इस वक्त लेते हुए सम्राज जो फील्डर थे, और पहला विकेट गिर चुका है 0 पर यहाँ पर एनएम मैंगलोर का। इट्स नॉट फॉर वन इन द फर्स्ट ओवर। तो नए बल्लेबाज नंबर 3 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। मंसूर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। एक और प्रमुख बल्लेबाज एनएम मंगलोर की ओर से इस वक्त क्रीज पर मौजूद, और गेंदबाज फयाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। मंसूर फयाज जिन्होंने बल्लेबाजी करते हुए उनके पारी के अंतिम गेंद पर छक्का लगाया था। शायद मेरे काबिल सतीश ने कहा कि वो छक्का निर्णायक साबित हो सकता है अगर गोरी यंग बॉयज़ के गेंदबाज एक बेहतर लिंक तो लाइन के साथ गेंदबाजी करते बल्लेबाजों पर भारी पड़ते हैं। तो ये गेंद इस बार रिवर्स से गेंद को स्वीप करना चाहता अंतिम क्षण में, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे। इस बार ओवर थ्रो और 1 रन। दिस इज एन फुलिशनेस, एब्सोल्युटली फुलिशनेस। वहां पर जरूरत ही नहीं थी थ्रो की, लेकिन करना ने थ्रो किया। डायरेक्ट हिट और ओवर थ्रो के रूप में 1 रन बल्लेबाज ने यहाँ पर पूर्ण कर लिया। रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और फिर से एक बार गेंदबाज फयाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। रियाज जो कि टीम के अन्य खिलाड़ी है इस वक्त उन्हें कुछ समझाते हुए फील्डिंग के व्यू के बारे में, फील्डिंग के सजावट के बारे में। और इस बीच फयाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस बीच अजीम सामना करते हुए ये गेंद इस बार अजीम के लिए इस वक्त खेलना चाहा, नॉट कंक्रीट दैट वन प्रॉपरली। इन फैक्ट बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद पहुंचे और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर। और गेंदबाज इस बीच फयाज फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए आजिम के लिए ये गेंद इस बार हवे में कवर पॉइंट पर, और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। आजिम का विकेट यहाँ पर गिर चुका है। गेंद पर हाफ माइंडेड स्ट्रोक इस वक्त खेला था और गेंद लगभग बल्ले पर ठीक तरह से नहीं आए, टॉप एज पर टकराए और आखिरकार आसान सा कैच कवर पॉइंट फील्डर लपकते हुए। देखिए ऑप्शन से बाहर की ओर गेंद निकल रही थी, गेंद पर अपना बल्ला अड़ाया, गेंद तक पहुंचे, गेंद पर अपना बल्ला अड़ाया और आखिरकार गेंद हाफ माइंडेडली गेंद को खेल दिया था इस वक्त तक और गेंद हवे में उछली और कवर पॉइंट पर इस कैच को लपक लिया गया। तो 2 विकेट गिर चुके हैं 1 रन के योग पर। दोनों आरंभिक बल्लेबाज तौफीक और अजीम इस वक्त पेविलियन वापस लौट चुके हैं 4 गेंदों के अंतराल में और निश्चित रूप से एनएम मैंगलोर इस वक्त कुछ हद तक संघर्ष की स्थिति में यहाँ पर नजर आता हुआ। तो इस वक्त नए बल्लेबाज एक और मुख्य बल्लेबाज आतिफ का आगमन यहाँ पर होता हुआ और आतिफ इस वक्त धीरे धीरे क्रीज की ओर कदम बढ़ाते हुए मंसूर का वो साथ निभाएंगे। निश्चित रूप से 1 रन पर 2 विकेटें गिर जाने के बाद इस वक्त दबाव एनएम मैंगलोर के ऊपर साफ दिखाई देता हुआ एक साझेदारी की ज़रूरत है और इस मोड़ पर एनएम मैंगलोर के दोनों अत्यंत अनुभवी खिलाड़ी इस वक्त क्रीज पर मौजूद है और देखते हैं जो साझेदारी की कमी इस वक्त दिखाई दे रही है, क्या ये दोनों बल्लेबाज उस कमी को पूरा कर पाते हैं या नहीं एक बेहतर साझेदारी के जरिए। तो फयाज अब तक उनका ये ओवर काफ़ी बेहतर हो चुका है और ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज आतिफ इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और ये गेंद फयाज की ये गेंद रिवर्स शॉट नहीं इस वक्त स्वीप कर दिया था आतिफ ने स्टंप्स को कवर करते हुए टॉप एज पर गेंद टकराई। शॉट स्कोर लेग पर जब तक गेंद फील्ड हो बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 2 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर। एक गेंद अभी भी बाकी इस ओवर में और इस ओवर में अंतिम बार फयाज गेंदबाजी करेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज
मंसूर के लिए और अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार 6 से 7 बार गेंद को जमीन पर पटकने के बाद दाहिना तो बढ़ता विकेट ये गेंद मंसूर के लिए स्वीप किया इस वक्त स्टंप्स एक्सपोज करते हुए, लेकिन स्ट्रोक्स में ज़्यादा रफ्तार रहे और गेंद को जब तक मिड विकेट पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर बेहतरीन ओवर फयाज का समाप्त हो चुका, जिसमें दोनों आरम बकार को पेविलियन वापस भेजने में वो सफल रहे पहले ओवर में। और पहले ओवर के समाप्ति के बाद एक मिक्स स्टार्ट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इस वक्त कर चुका है एनएम मैंगलोर। It's 3 for the loss of 2 wicket after completion of first over. 38 to get in remaining 30 balls for NM Mangalore at this situation. And the required run rate is now gone up to exactly 7.60 runs per over. और नौफल इस वक्त नया ओवर प्रारंभ करते हुए मंसूर सामना करने के लिए तैयार। दूसरा पावर प्ले ओवर राउंड की पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ दर्शकों से मैदान लगभग इस वक्त भरता हुआ धीरे धीरे। आज मंगलवार वर्किंग डे होने के बावजूद मैदान दर्शकों से लगभग इस वक्त भर चुका है और निश्चित रूप से यहाँ पर आज मंगलोर के टॉप सीडेड टीमों के बीच के मैचेस खेले जाते हुए और मुकाबला इस वक्त जारी है एनएम मैंगलोर और गोरी यंग बॉयज़ के बीच इस श्रृंखला के अगले दौर में प्रवेश प्राप्त करने के लिए। तो नौफल फील्डिंग में जमावट इस वक्त करने के बाद ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार मंसूर के लिए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए मिड ऑफ के फील्डर को इस वक्त तैनात किया गया है मिड ऑन पर और एक बार फिर से उन्हें मिड ऑफ पर तैनात तक किया जा रहा है। कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा 6 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार नौफर की गेंद ड्राइव किया इस वक्त मंसूर ने खूबसूरती के साथ वाइड लॉन्ग ऑफ पर गेंद पहुंची और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता वहां पर 1 रन का इजाफा हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 4 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। मंगलोर की 2 प्रतिष्ठित टीमों के बीच इस वक्त एक कड़ा मुकाबला यहाँ पर जारी है और इस बीच नौफल गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज आतिफ के लिए। एक बार फिर से फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिना तो बढ़ता विकेट आतिफ के लिए, ये गेंद आतिफ के लिए ड्राइव किया मिड ऑफ की दिशा में मंसूर 2 कदम आगे जरूर निकल आए लेकिन इन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर वापिस से यहाँ पर खींचते हुए और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 4 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में नौफल फेंक चुके हैं और अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार आतिफ इस वक्त सामना करते हुए नौफल की गेंदों का। और नौफल दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार आतिफ के लिए। ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट पंच किया इस वक्त कवर पॉइंट सी मारेगा जब बाहर 4 रनों के लिए। Exposing the stumps, played that was square of the wicket and he just clearing the infield and got the boundary for that. Have a look at this in the replay. देखिए किस तरीके से स्टंप्स एक्सपोज किया था कुछ हद तक और गेंद को इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट स्कूप कर दिया खूबसूरती के साथ कवर पॉइंट पर 4 रनों के लिए। आतिफ ने गेंद 2 टिप्पों के बाद सीधे सीमा रेखा के सीढ़ियों पर टकराती हुई और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 8 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 8 for the loss of 2 wicket in the over number 2 in progress. बेहतर स्ट्रोक आतिफ के बल्ले से लगता हुआ और एक बार फिर से नौफल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद स्वीप करना चाहा टॉप एज गेंदबाज के हाथों में और इसी के साथ यहां पर यह विकेट गिर चुका है। एक्स्ट्रा बाउंस टॉप एज पर गेंद टकराई, गेंद को मोड़ना चाहते थे आतिफ और फॉलो थ्रू में एक बार थोड़ा सा झिझक गए थे इस वक्त गेंदबाज लेकिन अंतिम क्षण में इस कैच को लपकने में सफल। देखिए यहाँ पर किस तरीके से गेंद उछली थी और फॉलो थ्रू में इस कैच को लिया गया था गेंदबाज द्वारा और यहाँ पर नौफल इस कैच को लपकने में सफल और आतिफ को पेविलियन का रास्ता यहाँ पर दिखा चुके हैं। 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर आतिफ का बेशकीमती विकेट गिर चुका है। अब ऐसा कहना पड़ेगा परेशानियों के बादल साफ इस वक्त एनएम मैंगलोर के ऊपर मंडराते हुए। 33 रन और चाहिए विजय के लिए और 26 गेंदें बाकी। 26 balls remaining, 33 more runs now they have to score for victory। और नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए रिवर शॉट स्पेशलिस्ट के रूप में जाने वाले बल्लेबाज इस वक्त अजहर का आगमन यहाँ पर होता हुआ। रिवर शॉट स्पेशलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं बल्लेबाज अजहर, वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और बल्ले को भी वो अजीब तरीके से पकड़ते बल्लेबाजी करते समय। हालांकि उनका
बायां हाथ नीचे रहता है बल्ले के हैंडल पर, जबकि दायां हाथ ऊपर रहता है। तो इस वक्त ये देखिए किस तरीके से गेंद को रिवर्स शॉट उन्होंने खेला था और आखिरकार रन इस बीच बल्लेबाज को यहाँ पर नहीं मिला। तो इस तरीके की बल्लेबाजी, इस तरीके से बल्ले को पकड़ने की वजह से यहाँ पर रिवर्स शॉट खेलने में काफ़ी सहायता हासिल होती है उनके लिए। तो इसकी वजह से वो रिवर्स शॉट स्पेशलिस्ट यहाँ पर जाने जाते हैं। डॉट गेंद हो चुकी है, अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी। और एक बार फिर से मंसूर और अजहर कुछ बातचीत करने के बाद अपने गेंदबाजी के मार्ग पर लौटते हुए, नौफल धीरे धीरे अपने कदम इस वक्त गेंदबाजी के मार्ग पर बढ़ाते हुए, चाहिए चंद और सफलताएं गोरी अंगबाज को अपनी पकड़ यहाँ पर मजबूत करने के लिए। और इस वक्त नौफल इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार अजहर। और पावर प्ले खत्म होने से पहले की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त नौफल तैयार, दाहिने हाथ ऊपर विकेट गेंदबाजी करते हुए अजहर के लिए रिवर्स शॉट खेलना चाहा, इस बार खेला एक्स्ट्रा कवर पर मिसफील्ड, और इस मिसफील्ड का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने 1 रन यहां पर पूर्ण कर लिए। तो 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 9 for the loss of 3 wicket, 2 overs completed, 2 overs belongs to the bowlers of Gori young boys. Absolutely, there is no doubt about that. They conceded just 3 runs. They conceded just 9 runs and capturing 3 wickets in the first 2 overs. और 2 ओवर इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा गोरी young boys के गेंदबाजों के पक्ष में जा चुका है। अब 32 रन चाहिए और गेंदें बाकी हैं 24, 24 balls left, 32 runs required. That means 4 overs remaining. 32 runs they have to score for victory. और यहाँ पर मॉनिटर पर देखिए करना, जो कि इस वक्त तक अत्यंत अनुभवी खिलाड़ी गोरी यंग बॉयज़ को उन्हें इस वक्त दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर गेंदबाजी हमसे दूर वाले छोर से इस वक्त संभालते हुए फयाज, जिन्होंने अपना पहला ओवर काफ़ी बेहतरीन फेंका था, सिर्फ 2 रन प्रदान करते हुए 2 विकेटें उन्होंने प्राप्त किए थे। और अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, निस्संदेह इस वक्त पहले ओवर के सफलता के सिलसिले को वो इस ओवर में भी दोहराना इस वक्त चाहेंगे और उस कोशिश में वो इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हुए और सामना करने के लिए तैयार इस वक्त बल्लेबाज अजहर। 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण में यहाँ पर दिखाई देता हुआ। और फयाज ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ऊपर विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त अजहर के लिए यह गेंद ड्राइव कर दिया अजहर ने। इस वक्त जगह ठीक से नहीं बना पाए, लेकिन 1 रन ना उन्हें जरूर मिला। इससे पहले कि कवर पॉइंट पर गेंद को जब तक फील्ड किया जाता और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर शुरू हो चुका है। 10 for the loss of 3 wicket at the start of the third over. In fact, मंसूर जैसे स्ट्राइक पर आए, फील्डिंग का व्यू हो इस वक्त बदलता हुआ, स्क्वायर लेग फील्डर को इस वक्त पीछे भेजा गया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, गली के फील्डर को इस वक्त पीछे भेज दिया गया डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर, लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइडर, लॉन्ग ऑन थोड़ा सा सीधा और डीप मिड विकेट ठीक सीमा रेखा के पास मौजूद इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज मंसूर के लिए स्वीप किया इस वक्त, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 11 for the loss of 3 wickets. Still the match is now equally balanced and the equal battle is now continuing here. और इस बीच गेंदबाज फयाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार इस वक्त अजहर सामना करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट टॉप है, जिस वक्त मौका जी नहीं करना यहाँ पर ना, और इस बार रन आउट का खतरा, इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। अजहर दौड़ आए थे और मंसूर के द्वारा कोई रिस्पांस नहीं, हालांकि कैच को तो करना लपक नहीं पाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने गेंद को फील्ड करते हुए देखा कि अजहर काफ़ी आगे निकल चुके हैं, आधे पिच तक जा चुके हैं, आसानी के साथ गेंद के साथ दौड़ कर आए और यहाँ पर विकेट चटका दिया। तो अजहर का विकेट गिर चुका है और अब ऐसा कहना पड़ेगा अजहर का विकेट गिर जाने के बाद NM मैंगलोर आर नाउ लुकिंग डीप इन ट्रबल। 11 for the loss of 4 wicket। और इस संकटमय परिस्थितियों में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए इनफॉर्म खिलाड़ी, इस ऋतु के इनफॉर्म खिलाड़ी रियाज का आगमन यहाँ पर होता हुआ, और ऐसा कहना पड़ेगा गोरी यंग बॉयज़ को अगर यहाँ पर 40 रनों के अंदर NM के बल्लेबाजों को रोक कर रखना है तो यहाँ पर मंसूर और रियाज के ऊपर नियंत्रण लगाना उनके लिए बेहद ज़रूरी बन चुका है। और देखते हैं यहाँ पर वो इस
प्रयत्न किस हद तक उनके गेंदबाज यश प्राप्त करते हैं। और जहां तक एनएम मैंगलोर का सवाल है, इस वक्त मंसूर और रियाज की उपस्थिति उनके लिए बेहद जरूरी है। इस वक्त एक साझेदारी जमती है ये दोनों इनफॉर्म बैटर्स के बीच, तो निश्चित रूप से एनएम मैंगलोर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकता है। फिलहाल मैच इस वक्त बराबरी पर रुक चुका है। 11 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज फयाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, पहली बार रियाज के लिए, और रियाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज फयाज की गेंदों का। और इस बीच कुछ हद तक बाधा पिच के बीच एक बार फिर से तैयार, कुछ हद तक हवा मैदान की दाईं से बाईं और इस वक्त गुजरती हुई, जिस तरीके से पत्ते के डाल वृक्ष के डाल के पत्ते लहरा रहे, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हवा मैदान की बाईं से दाईं और इस वक्त गुजरती हुई। और इस बीच गेंदबाज इस वक्त तैयार, फयाज दाईं आता ओवर द विकेट, रियाज के लिए फैंटास्टिक डिलीवरी, मत स्ट्रेटर लाइन, गेंद को इस वक्त खेलना चाह स्क्वायर ऑफ द विकेट, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्कोर रुक चुका है 11 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर। दर्शक काफी खामोशी के साथ मैच का मुआयना इस वक्त करते हुए, मैच एक दिलचस्प मोड़ पर आकर रुक चुका है। फयाज इस वक्त रियाज के लिए उछाला, रियाज ने मौका हो सकता है, लंगो फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, और इसी के साथ रियाज का बेशकीमती विकेट यहां पर गिर चुका है। उछालना चाहता, लंगोफ सीमा रेखा के ऊपर से उछाला जरूर, लेकिन स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम नहीं कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके। और लंगोफ पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्होंने बाखूबी इस कैच को लपका। वो जानते थे, दीपक जो फील्डर थे वो जानते थे ये विकेट उनके टीम के लिए इस वक्त बेशकीमती साबित होगा अगर वो कैच को लपकेंगे, और उन्होंने कोई गलती नहीं की। अब रियाज का विकेट गिर जाने के बाद ऐसा कहना पड़ेगा, नीला आकाश तले बादल तो इस वक्त नहीं दिखाई देते हुए, लेकिन परेशानियों के बादल जरूर इस वक्त एनएम मैंगलोर के ऊपर साफ मंडराते हुए। 11 रन 5 विकेट और एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गोरी यंग बॉयज के गेंदबाज। और जहां तक तो इस वक्त 11 रनों पर 5 विकेटें गिर चुके हैं। निश्चित रूप से यहां पर कहना पड़ेगा परेशानियों के बादल इससे पहले कि घने हो, इस वक्त एक साझेदारी यहां पर निभानी है एनएम मैंगलोर के बल्लेबाजों को। तो इस वक्त एनएम मैंगलोर की ओर से उनके अत्यंत अनुभवी बल्लेबाज सादिक का आगमन होता हुआ, और इस वक्त सादिक का जहां तक सवाल है, उनको अब अपने सामर्थ्य का 100% यहाँ पर अनावरण करना होगा अगर अपने टीम को मंजिल तक पहुँचाना है। तो इस वक्त दबाव में इस वक्त एनएम के बल्लेबाज और गेंदबाज फयाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज सादिक के लिए इस वक्त 30 रन चाहिए विजय के लिए, 19 गेंदें बाकी, और इस ओवर में अंतिम बार। इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए फयाज सादिक के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद बेहतर, फैंटास्टिक डिलीवरी एंड अ फैंटास्टिक स्पेल केम टू एंड फ्रॉम फयाज। 11 for the loss of 5 wicket, 3 overs completed, half the way mark, still half have to go, 30 runs to get from remaining 3 overs, 5 wickets they got in their hand. लास्ट recognized pair at the crease, मंसूर एंड सादिक। और निश्चित रूप से यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा तख्ता ज़रूर इस वक्त गोरी यंग बॉयज का भारी लगता हुआ, लेकिन बाउंस बैक करने का मौका ज़रूर है इस द्वितीय आध में एनएम मैंगलोर के बल्लेबाजों के लिए। तो आइए सतीश, माइक्रोफोन पर आपको इस वक्त बुलाते हैं, हम माइक्रोफोन पर आपको इस वक्त बुलाते हैं। तो अगले मैच के लिए इस वक्त मैं कॉल करता हूं केएफसी कोडिकल और यंग फ्रेंड्स उरुवा के खिलाड़ियों को कृपया साइन के लिए स्टेज पर संपर्क करें। तो यहाँ पर 30 रन 3 ओवर में, तो निस्संदेह सतीश एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन पहले प्रथमार्ध में यहाँ पर गोरी यंग बॉयज की गेंदबाजों ने दिया है, और इसे द्वितीयार्ध में भी इस सफलता के सिलसिले को यहाँ पर वो बरकरार रखते हैं, तो निस्संदेह इस मैच में वो विजय दर्ज कर सकते हैं। लेकिन मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, और जहाँ तक एनएम क्रिकेटर्स के विजय का सवाल है, इस वक्त उनकी सारी उम्मीदें, सारी आशाएं इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर निर्भर, मंसूर और सादिक के ऊपर। Well, thank you, Gopi. Absolutely right. You are just talking about that the first 3 overs really belongs to the Gori young boys. With that, they bowled absolutely fantastic. Just we are talking about before the beginning of NM Cricketers Mangalore innings. We are just talking about formidable batting department of NM Cricketers Mangalore. It might be not a big total to chase on, but the Gori young boys made it big
because of that three very good overs by Payaz as well as Naufal. Naufal will going to continue. No change in the bowling. Naufal will going to bowl his second and last over of his quarter. Right arm over the wicket. Once lofted, high up in there. Opportunity, no opportunity. Ball sailing into the commentator roofs for a U6. 17 for the loss of 5 wicket. All in sudden, the kind of treatment and acceleration which is required for the NM cricketers Mangalore. And Mansoor is producing that absolutely vital strike from the bat into the commentator row for a 6. Just up and over, effortlessly played, stand and delivered. Have a look at it in the replay. Coming into the batter and a lovely shot. Have a look at that way that Mansoor is just watching the ball. He knows that he middled that one very well. And ball just sailing into the commentator ropes. Everyone's eyes into the ball. This is a very good camera work we can see there from Bedra Media. Frustration eyes and satisfied eyes. The two type of eyes we can witness here. It's a 17 for the loss of 5 wicket. So now fall again. Bowling away from us. Right arm over the wicket. Top edge. The catch, it is a call. And fielder charging from the long on. Complete the catch. Harsha, I think it's right a bit of confusion because the one's a fielder from the mid wicket and one fielder from the long on. Just try to get that one and have a look at that. Mansoor has got a top edge and ball wide high and high and a fielder from deep long on. Harsha completes the catch. The one fielder is coming from the mid wicket, also try to get the catch, but Harsha has got an eye on the ball till the last moment. It's a good comeback here by the bowler Naufal, even though he conceded a 6, but he got the same batter in the very next delivery. This is turning out to be a great comeback here for the Naufal. It's not so easy for any batter, but unfortunate for Mansoor that after getting a 6, he need to be a little bit careful, but he just wanted to get one more big shot. And he got a leading edge from his bat and one more wicket is back in the pavilion. It's 17 for the loss of 6 wicket. Some kind of conversation is conversation between umpire Roland Pinto and Sadiq, the experienced campaigner. And now new batter coming to the middle. The Mazim, the young talented player, has got opportunity to represent for NM cricketers Mangalore. Can he be able to justify his represent in NM cricketers Mangalore in the difficult condition? Needed some partnership for NM cricketers Mangalore, but Gori young boys are looking so good. Now fall. Right arm over the wicket. Oh, says that Flum. Absolutely Flum in front of the wicket. No doubt at all. His back foot is right in front of middle stump. Vivek has got no hesitation to raise his finger. The wicket number 7 back in the pavilion of NM cricketers Mangalore. They are in a deep trouble. It's unusual scoreboard. It's 17 for the loss of 7 wicket. Well, what kind of cricket you are witnessing here? All we are thinking about this day will going to be a high-scoring day for the cricket lovers. They will going to enjoy some sixes and boundaries, but different thing you are watching here. Even this ball can be useful for the bowler if they bowl well. We can witness some maiden overs. We have witnessed some maiden wickets as well. This is what the cricket is all about. Sometimes even the condition is just opposite to the bowler, but some bowlers can be very effective in this kind of ball. Have a look at it in replay. That was absolutely flum, isn't it? Absolutely flum. And immediately when the ball hits the stump, have a look at the reaction of the wicketkeeper behind the stump and the reaction of the bowler. It's been outstanding camera work, close work, closing cameras, and absolutely have a look at that wicketkeeper. They knows that this is a huge wicket as well here for the team, Gori young boys. It's 17 for the loss of 7 wicket. But you can't say anything in cricket. Cricket is a game of glorious uncertainty. That uncertainty which happened in the match number 1 when Gori young boys won the match against Arpros Khana. Hat-trick delivery. This time well collected by the wicketkeeper behind the stump. Now they will go into question. Naufal will go into question about that decision from the umpire Vivek. A lovely collection there by the wicketkeeper Mahesh. But here is the umpire. How to see, the third umpire will go to see whether the ball is inside the line or not. All along the ground. Very interesting to see that. The ball, well, it's going to be a close one. 17 for the loss of 7 wicket. It's definitely going to be a very interesting sometime.
It's more difficult for umpire as well, because of that front line is always going to slight a bit of confusion. There's a 17 for the loss of 7 wicket. 17 for the loss of 7 wicket. The angle vector. Yes, now umpire. Yes, it's going to be a wide. The wide call by umpire Vivek, and is the evidence good enough for the third umpire also to call that wide? With that wide, the scoreboard is 18 for the loss of 7 wicket. The wide signal umpire. So still 23 more runs required for the victory. 23 required from 15 balls. Match which is not yet over. Even the NM cricketers Mangalore are really struggling in the middle. As far as the fall of wicket is concerned, they lost 7 wickets. They doesn't want to lose a wicket here onwards, because each and every wicket, the fall of wickets makes things a little bit difficult for the NM cricketers Mangalore. But Gori young boys absolutely tighten up the screws. Here is again bowler bows. Right arm over wicket bows. Wanted to go for the reverse shape, improvising that one quite nicely down to deep third man region. Fielder behind the ball before the fielder will go into run to assist back to field the ball. Ample time for the batter to complete the single with that single scoreboard. Namuzan to 20 on the board for the loss of 7 wicket. 20 for the loss of 7 wicket, and another couple of runs which is completed. The 41 on the board, 41 which is the target, 20 on the board for the loss of 7 wicket. Another 21 more runs required for the victory. This time again, swings it away and straight to the fielder. The square-leg fielder making no mistake at all in the negation. What a fantastic comeback here by Naufal. After that 6 in the first ball of the over, then he goes on to pick the 3 wickets, isn't it? It is going to be outstanding comeback here by Naufal. But once the batsman hits that one pretty well, right from the middle of the ball, bat by Imran. But unfortunately, ball landed safely to the hands of the fielder at the backward square, in front of square. The wicket number 8 is back in the pavilion of NM cricketers Mangalore. It's a 20 for the loss of 8 wicket. I request the two teams captain please be reported here immediately for the tossing ceremony for the next match. ಹಾಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಯಾರು ಕೂಡ ಇವನು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಕೆಲವು ಗಾಡಿ 2 ವೀಲರ್ಸ್ ಮತ್ತು 4 ವೀಲರ್ಸ್ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಗಡೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸ್ಥಾನದ ಎದುರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಗೆ this time catch it is called. One more wicket is back in the pavilion. It's a 20 for the loss of 9 wicket. Can you believe this? It's a 20 for the loss of our 9 wicket. It's an absolutely dramatical collapse you can see in the NM cricketers Mangalore. What we are watching here, unusual scoreboard. Batter this time swept the ball Fayaz, and Faisal in direction, and the ball went straight to the hands of short mid wicket, and celebration begins. Disappointment pace of Faisal. We can see that he wanted to sweep the ball, got a leading edge, and he's back in the pavilion. It's 20 for the loss of 9 wicket. What a fantastic over. 4 wickets in this, 5 wickets in fact total. And in this particular over, Naufal picked up 4 wickets. It's been a great over. 6 in the first ball. Everyone thought it might be the comeback over for the NM cricketers Mangalore. But all we are seeing that after that 6, the wickets are tumbling like a house of cards. The wickets are tumbling like a house of cards. The 20 for the loss of 9 wicket. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎದುರುಗಡೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರಿಂದ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಈಗಾಗಲೇ ಗಾಡಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 20 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 9 ವಿಕೆಟ್. 21 required for the victory. The over number 4 which is comes to an end. 2 overs remaining.
21 required, 10.50 runs per over. Sadiq, the last recognized player in the side of team NM Cricketers Mangalore, the need to complete the job along with the batter number 11 in the non-striker end. Right arm over the wicket. Also, the valiant effort there from Mahesh. Diving effort, but not good enough for him to catch that one. He got a hand onto that, but unfortunately, ball just slipping out of his hand, and Sadiq survived. Timed out too early. 11 balls remaining, but already it's a timed out call by umpire. Means it's not a good sign for Gori young boys. You are taken a lot of time. You are taken a lot of time. It's 20 for the loss of 9 wicket. But if a different scenario, if it is NM Cricketers Mangalore is in a good position, but here is NM and Gori young boys looks like they just wanted to get 1 wicket to complete the victory. But Sadiq is a man, is a fighter. He definitely will not going to give this match safely for the opposition. He will definitely going to try for the victory for the NM Cricketers Mangalore. But the big ask, but not impossible. Well, still they are taking a time. You are taking a still much time, means it's going to be one more fielder. Need to be inside very quickly. Again, the bowler will go into ball from the far end. Sahil. Right arm over the wicket to Sadiq. Sadiq drives that one down to Widish. Long on, almost in the cow corner. One more single. Sadiq is out of the strike. What the bowler wanted to do here is that takes a man, Sadiq, out of the strike and bring the man, Mujib. You cannot underestimate Mujib. He is also the good contributor. He can contribute from the bat. That's why I already mentioned once it's NM Cricketers Mangalore chasing 41 to win the match. I told that NM Cricketers has got plenty of batting lineup, but very disaster to see that how well they lost 9 wickets very cheaply. Sahil again. Right arm over the wicket. Mujib left, beautifully swept that one down to deep square leg region. Prajwal, the man in the deep square leg, very quickly moving to the direction of the ball. Good return as well. Just a single. 22 for the loss of 9 wicket. With the 1 wicket, with the last wicket, they need to get another 19 runs to win the match. At the same time, they need to keep in eye that asking run rate is also climbing up. It's a creeping up. 19 required from 9. Right above the Sadiq swings and missed. Ball just passing around the legs of the batter, but umpire will going to see here. And Sadiq asking for the review from the umpire for the wide. Well, that is going to be very interesting there. That is going to be very interesting that the decision of the umpires will go into question by Sadiq, because just wanted to take the advantage of that review. Wait and see what could be the decision for the third umpire. Will it go into be a fair delivery or will it go into be a wide delivery? 22 for the loss of 9 wicket. Yeah, it's a very good review taken by Sadiq. It's a wide. It's a wide. This is what the level of confidence what Sadiq has got, and is called it's a wide. It's a 23 for the loss of 9 wicket. So Sahil need to reball that. Sahil need to reball that. The 23 for the loss of 9 wicket. Sahil to ball from the far end. Right arm over the wicket. Sadiq this time wanted to swing that one, missed it completely. Fantastic delivery there from Sahil. He's a revolution for the Gori young boys bowling department, because if the Gori young boys got a success in this particular season, that's only because of these bowlers did a great job for Gori young boys. Sahil is a leading from the fan. 23 for the loss of 9 wicket. Right arm over the slow ball, left it. Its experiment is not good enough, and Sadiq has got a good enough power to get the ball into the spectators' gallery for a 6. Well, experiment is too much here from the young man. Looking for the slow ball, short pitch delivery, waiting for that short pitch delivery done. Driven that one, lofted it and just over the head, straight into the deep, straight long on region boundary for a 6. 29 for the loss of 9 wicket. Now that 6 will go into open the gate for the team NM Cricketers Mangalore, because 12 to get, the match which is not yet over. 7 balls remaining. Well, 7 balls remaining, and
12 runs required for the victory. Sadiq having in the middle, match which is not yet over. This time up and over, straight to the fielder. And Sahil celebrates. Gori young boys have won the match by 11 runs. Sadiq once again looking for a big shot, but he's just choosing that wrong area. That is a deep long off, widish long off. Very difficult to get the distance in the afternoon. And he just pays the penalty for that. Sadiq tried his level best, but not good enough to win the match. And Gori young boys absolutely there played a good game of cricket. Especially the bowler doing the job here for the team Gori young boys. It's not so easy for Sahil, young Sahil, after that 6 to get the one good ball here. And a fielder from deep long off. And Deepak is a man who completed the catch. Fantastic match which is